Join fast. वेट करो। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, सो कोई बात नहीं। Okay, we'll start now. So last class I have complete these two, the point slope form and 2-point form, and in this class we'll start the slope intercept form. Okay, so let's start. Here heading right, slope intercept form. Slope intercept form. What is slope intercept form? Slope intercept form का फॉर्मूला होता है y इक्वल mx प्लस c. ओके, मैं तुमको प्रूफ करके दिखाता हूँ। सब बच्चे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फर्स्ट यू ड्रॉ द डायग्राम। एक्स एक्सिस ये है, एक ये बनाओ, ये तीनों पॉइंट से एक लाइन पे। ओके, ये है 0C, इस पॉइंट को दे दो 0C। ये है C का डिस्टेंस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये लाइन एल। ये फिगर 1 नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 यू ड्रॉ दी सेम। मैं जब समझा रहा हूँ क्या कैसे करना होगा। ओके, बताता हूँ, वेट करो। ओ एक्स डैश वाई डैश, और इसको तुम ऐसे ड्रॉ करो एंड इसको दे दो 0,b, इसको दे दो a स्मॉल a, 0। ओके, ये a है, ये b है, ये लाइन l है। ओके, तो ये o 0 0 होता है। फर्स्ट राइट लेट the slope of line L, the slope of line L be m and its y-intercept y-intercept is C as shown in adjacent figure। देखो, ये स्लोप है लाइन एल का, इस लाइन एल का स्लोप है एम, ये लाइन का एल का स्लोप है एम, जिसके की वाई इंटरसेप्ट सी होता है। ओके, नोट that the line is passing through 0C. Okay, line is passing through 0C. Your line is passing through 0C. So therefore, using slope point for y minus y1, that means y1 is c, so then y1 is c, y minus c is equal to a x minus 0, x1 is 0, implies y minus c is equal to mx
y is equal to mx plus c. ओके, लिखो लिखो लिखो। ये है x1 y1, y minus y1 that means y minus c is equal to m for x minus x1, x1 is 0, so x minus 0. Okay, right, thus the equation of a line with slope m and y-intercept c each y is equal to mx plus c. ओके, लिखो। एंड इसके बाद एक नोट लिखाऊंगा, नोट हेडिंग डालो नोट। Note, if the equation passes through origin, if the equation of line, if the line passes through origin, that is the y-intercept y-intercept is 0, then y minus 0 is equal to mx plus c. That means simply y is equal to mx. Okay, if the origin is 0, if the equation of line passing through the origin 0 0, that means y minus 0 mx. Okay, y is equal to mx. Okay, now we will solve the question based on y is equal to mx. Okay, plus c and y is equal to mx, दोनों आप हम सॉल्व करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो. Find the equation of the straight line which makes an angle 15 degree with the positive direction of x-axis and which cuts and intercepts of length 4 centimeter on the negative direction of y axis. क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करेंगे. ओके, ओके, देखो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना होगा which makes an angle 15 degree. 15 डिग्री जो एंगल बनाता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन का 15 डिग्री जो बनाता है उसका लाइन का इक्वेशन हम निकालेंगे. एंड which causes an intercepts of length 4 सेंटीमीटर, जो 4 सेंटीमीटर में जो काटेगा y एक्सिस में, that means ऐसे ये है 4 सेंटीमीटर. ओके, लिखो. लेट m be the slope of line देखो ये होगा 15 डिग्री, ये होगा 15 डिग्री
and नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का देन 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया ऑफ लाइन एल। Therefore m is equal to tan 15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। tan 15 का वैल्यू होता है 2 माइनस रूट 3। मैं जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था मैं बता दिया था। ओके 2 माइनस रूट 3 ओके and since C is 4 centimeter given, C intercept there 4 centimeter, therefore equation of line imply y is equal to mx plus c, means y is equal to m कितना 2 minus root 3 m into x plus c plus 4। c is what negative direction of y axis, so c is minus 4। okay minus 4, y is equal to 2x minus root 3x minus 4। okay आंसर ये है आंसर। ओके सब से क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे। ओके then question number 2, find the equation of line intersecting the x-axis, intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2, to the left of origin, left of origin with slope -2। कैसे करेंगे? लिखो लिखो। ओके लिखो solution here। स्लोप कितना है -2, दैट मीन्स m is equal to -2, c is equal to 3, लेफ्ट टू दी 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, दैट मीन्स लेफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है -3। therefore equation of line is y is equal to mx plus c, y is equal to m कितना -2x -3, दैट मीन्स यहाँ पर ले आओ 2x plus y plus 3 is equal to 0। लिखो ओके now question number 3, find the equation of line intersecting the y-axis at distance of 2 units, intersecting
the y-axis at the distance of 2 units above the origin and making an angle of above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of the axis, with the positive direction of the x-axis. Okay, right solution. लिखो JJ Span Y1M9Y told hi. Yes, tell what happened. देखो यहाँ पर एम फास्ट निकल एम बराबर एम इज इक्वल टू tan थीटा या थीटा बराबर 30 डिग्री. So m is equal to tan 30 degree, that means 1 by root 3, and c is equal to y-axis at the distance 2 unit above the origin, that means positive. Given therefore equation of line is equal to y is equal to mx plus c. y is m कितना 1 by root 3 x plus c कितना 2 implies y is equal to x plus 2 root 3 by root 3 implies root 3 y is equal to x plus 2 root 3 implies x minus root 3 y plus 2 root 3 is equal to 0. ये यहाँ पर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा. ओके, now question number 4. Find the equation of line. ये है आंसर. Find the equation of the line passing through 0 0 with slope 2. Okay, देखो since the line is passing through origin, so m is equal to 2. Therefore equation of line simply y is equal to mx. Already I have told you y is equal to 2x. Answer. Okay, मैं यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया हूँ. यहाँ पर देखो, if the line passes through origin, the y intercept is 0, then y intercept 0 होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला y is equal to mx. मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ. ओके, कंप्लीट. लिखो लिखो.
Okay, next we will learn the new part. Intercept of a line. Next point, intercept of a line. Intercepts, x intercepts and y intercept. इन दोनों इंटरसेप्ट का हम पता कैसे करेंगे. ओके, फर्स्ट इसका फार्मूला लिखो. फार्मूला x by a plus y by b is equal to 1. Okay. First one, coordinate system you have to draw. ये o x dash y dash, ये इससे क्रॉस करेगा. ये होगा a, 0, ये होगा 0, b. ओके, ये लाइन L. फर्स्ट राइट कंसीडर consider a line L which cuts off intercepts A and B on axis of x and y, that is OA is equal to A and OB is equal to B. Okay, then the coordinates of A are A0 and that of B are 0, b. Thus we have 2 points A, A0 and B, 0b. Okay, now equation of AB is equal to implies y minus y1. y1 is 0, y1 is 0 is equal to x2 minus x1. x2 minus x1 is ये x1 y1 x2 y2, सॉरी ये x1 y1 x2 y2 x2 minus x1. b minus 0 by 0 minus a 4 into x minus a. y is equal to b by minus a x minus a, then minus a y is equal to bx minus ab. ओके, ये होगा ए बी डिवाइड कर लो. ये ए बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई. डिवाइडिंग ए बी ऑन बोथ साइड्स वी गेट डिवाइडिंग ए बी on both sides we get AB by AB is equal to BX plus AY by AB, implies AB by AB is equal to BX by AB plus AY by AB. AB cancel, BB cancel, AA cancel. ये होगा x by A plus y by B is equal to 1. प्रूफ. ओके, ये है इंटरसेप्ट ऑफ लाइन का फॉर्मूला. x by A plus y by B is equal to 1. अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन लगाएंगे. ओके,
लिखो लिखो। Complete. Question number 5. Wait. Question number 5. Find the equation of a line which makes equal intercepts on x on axis, which makes equal intercepts on axis and pass through 2, 3 and pass through 2, 3. लिखो। क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा भी फायदा नहीं होगा। तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जान पाओगे। Alright, solution. Let A be length of equal intercept. Let A be the length of equal intercepts. Then equation of line is given by, then the equation of line is given by x by a plus y by b is equal to 1, since x by a plus y by a is equal to 1, a is equal to b, since it is an equal intercept. It is an equal intercept, implies x plus y by a is equal to 1, implies x plus y is equal to a. Question number 1. Okay. Though this line passes through 2 and 3, passes through 2, 3, then a barabar, here 2 is x and 3 is y, so 2 plus 3 is equal to 5. Okay. Therefore, equation of line is equal to x plus y is equal to 5. Answer. Okay. Then question number 6. लिखो question number 6. P A B is the midpoint of a line segment, is the midpoint of a
line segment between axes so that equation of line is x by a plus y by b is equal to 2. Okay, लिखो. First you have to draw the axis. O x, ये हुआ x dash, ये y dash, ये एक लाइन होगा, ये पॉइंट A that means x, 0, ये B 0, y, and this is the P B the midpoint given. P is the midpoint of the line segment between axes. Okay, yes, line L है. लिखो. Now let A x, 0 and B 0, y be 2 points where the line intersects, x and y axis respectively, and PA, B each midpoint of AB. Then 0 plus x by 2 is equal to A implies x by 2 is equal to A implies x equals to 2A. देखो ये स्टेप समझना. अब इस एक निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? दो इट इज मेड पॉइंट. सो 0 plus x1 plus x2 by 2, so 0 plus x by 2 and x by 2 is equal to A, x equals to 2A. Similarly, y plus 0 by 2 is equal to B is equal to 2y. Okay. Yes, similarly 0 plus y by 2 is equal to B, and y by 2 is equal to B, and y is equal to 2B. Okay. So now the equation of line will be x by a plus y by b is equal to 1. ये है मेन इक्वेशन ऑफ लाइन. अब सब्स्टिट्यूट करो. x के जम x by a, तो a की क्या वैल्यू है? 2a. x के सामने 2a, y के सामने 2b 1 implies x by a plus y by b, यहाँ पर चला जाए 2. ओके, प्रूफ. ये x के सामने 2a होगा, y के सामने 2b होगा. तुम x के जगह पर 2a मत पकाना, y के जगह 2b मत पकाना, सामने पकाना. वो x के सामने 2a रहेगा, x के सामने 2a. लेट इट बी a, वी हैव राइट 2a. ओके, लिखो.
Complete. Question number 7. A straight line got intercept from the axis. Cuts intercept from the axis of coordinates the sum of whose reciprocals is a the sum of whose reciprocals is a constant, so that it always passes which fixed point? Passes through a fixed point. लिखो right solution. Let the equation of the line x by a plus y by b is equal to 1. Its intercepts on x and y axis are on x and y axis are a and b respectively. It is given that 1 by a plus 1 by b is constant. Let constant be k. K is constant. यहाँ पर पढ़ लो. From the axis, the sum of whose reciprocal is a constant. उसका रेसिप्रोकल a और b का रेसिप्रोकल जब लोगे आंसर कांस्टेंट आएगा. ओके. So therefore 1 by ka plus 1 by kb is equal to 1. That means ये k by 1 है, ये k by 1 है, ऊपर चला जाएगा. 1 by k by a रहेगा, 1 by k by b रहेगा, is equal to 1. So imply 1 by k, 1 by k satisfy the equation x by a plus y by b is equal to 1. Hence it always passes through a fixed point. Okay. लिखो. क्वेश्चन दिया है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन मानना होगा, उसका इंटरसेप्ट तुम मानना होगा. जब एक वर्ड दिया है सम ऑफ हुज रेसिप्रोकल इज ए कांस्टेंट, उसका रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट का कांस्टेंट होना चाहिए. सो दैट इट ऑलवेज पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट. ये 1 बाय के. अब जब 1 बाय के कांस्टेंट है, दैट मीन्स ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू कुछ कांस्टेंट होगा. सो 1 बाय के ये होगा फिक्स्ड पॉइंट में पास करेगा. ओके. लिखो.
कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इन नॉर्मल फॉर्म में ढेर सारा क्वेश्चन कराऊंगा, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। मैं फास्ट पढ़ा दूंगा, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करा दूंगा। और जब इक्वेशन ऑफ लाइन टोटल खत्म हो जाएगा, जब टीच करना खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन 2-3 क्लास करेंगे। ओके, 2-3 क्लास क्वेश्चन में डील करेंगे। ओके, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? ओके, फॉर्मूला लिखो। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ओके, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फॉर्म। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। इसका प्रूफ कोई ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट फॉर्मूला याद कर लो। ओके, आदित्य कुमार, हाँ क्या? हाँ, क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन of a line of a line that is perpendicular distance from the origin is 5 unit and angle made by the perpendicular and the angle made by the perpendicular with the positive axis is 30 degree। देन इसका इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे बताओ? देखो सॉल्यूशन, यह p बराबर 5। ये जो ओरिजिन से लाइन खींचा हुआ है उसका वैल्यू p होता है एंड अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री होता है। ये दोनों गिवन है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन implies x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. That means x cos 30 degree plus y sin 30 degree is equal to 5। p का वैल्यू है 5, तो मैं वैल्यू जस्ट पुट कर लिया। अब बताओ cos 30 का फॉर्मूला। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। वेरी गुड। y sin 30 का 1/2, ये 5 होता है। इम्प्लाइज ये √3x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 5। ये होगा √3x प्लस y/2 इज इक्वल टू 5। इम्प्लाइज √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। इम्प्लाइज √3x प्लस y। ओके, इतना। ओके,
लिखो, क्योंकि ना मैं यदि यहाँ पर -10 ले आऊँगा आंसर 0 हो जाएगा मेरा। तुम्हारा मार्क भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ना फॉर्मूला है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p। एक कांस्टेंट रहना जरूरी है RHS में, ओके, एक्सेप्ट 0। ओके, लिखो, कंप्लीट। Or by the symmetric form of equation of line, okay, or by the symmetric form of equation of line। Okay, heading right, equation of line in symmetric form, okay, सिमेट्रिक फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय sin थीटा इज इक्वल टू r। दिस इज नोन एज symmetric form of the line। This is known as symmetric form of the line। फॉर्मूला ये है, ओके, x माइनस x1 बाय cos थीटा इज y माइनस y1 बाय sin थीटा इज इक्वल टू r, ओके। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्ड करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 9, find the distance of points find the distance of points 2, 3 from the line, 2, 3 from the line, 2x minus 3y plus 9 is equal to 0, measured along a line, x minus y plus 1 is equal to 0। लिखो, कैसे करेंगे, solution, the slope of the line x minus y plus 1 is equal to 0, that is 1, ओके। इसका स्लोप 1 है, mx प्लस है ना, ये m1 है, ओके। सो इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, so it makes an angle 45 degree with the positive direction of x-axis and passes through
2 comma 3. Okay, equation of line is given by, therefore equation of line is given by x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta is equal to x minus 2 by cos 45 degree is equal to y minus y1 by y minus y1 कितना 3 by sin 45 डिग्री. ये है 1 tan theta is equal 1 theta is equal 45 degree equal to r. Any point P on the line is okay, right, any point P on this line is P is equal to r cos 45 degree plus 2 P r x कोऑर्डिनेट में r cos 45 degree plus 2 y कोऑर्डिनेट में r sin 45 degree plus 3 equal to P ये 2 plus 1 by root 2 r by root 2 ये 3 plus r by root 2. ये है the distance of a point of a line, and this is also known as indirectly parametric form. Okay, ये है सिमेट्रिक फॉर्म. ये जब डिस्टेंस पूछेगा तब तुम पैरामेट्रिक फॉर्म में ही आंसर दे दोगे. ओके, अब तुम हेडिंग डालो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. पैरामेट्रिक equation of a straight line. Okay, parametric equation, right, when the equation of a line is expressed in terms of a parameter in terms of a parameter then it is called as parametric equation. The parametric equation or the parametric form of the equation is form of the equation is x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta is equal to r. ये है सिमेट्रिक फॉर्म. आप देखो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे निकलते हैं. x कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू x1 प्लस ये x1 प्लस r cos थीटा एंड y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा. इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन. ओके, जो अभी मैं यहाँ पर कराया. ओके, complete.
ओके, तो आज के लिए इतना ही। सब जो बच्चे लाइव दिख रहे हैं या रिकॉर्डेड में दिख रहे हैं, सभी बच्चे को मैं बोल रहा हूँ क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से तुम्हारा एक फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे। ओके, so today we have completed every types of equation of 9. So slope intercept form completed, intercept form of line completed, normal form completed, symmetric form completed, parametric form completed. Next 2 to 3 class I will do questions based on this equation. Next 2 to 3 class, यदि आगे भी होगा 3 to 4 भी हो सकता है। ओके, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम गिवन लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, थ्री टाइप्स ऑफ रिडक्शन। ओके, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पार्ट 2, ये है पार्ट 1। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे को मैं क्वेश्चंस में क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा 3 से 4 क्लास में। ओके, एंड जो क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा 1.5 घंटे का क्लास रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, एंड हैव ए नाइस डे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो भी बच्चे लाइव दिख रहे हैं या रिकॉर्डेड में दिख रहे हैं, सभी बच्चे को मैं बोल रहा हूँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके बाय, एंड हैव ए नाइस डे।